Hello, my dear students. How are you? Welcome to the beautiful channel पढ़ाई का कवच. Myself Tosip sir. Students, today we are going to discuss about the new topic sustainable development. The development which is sustained throughout the decade of a year or thousand of a year. Sustainable development is the development which meets the needs of present generation without compromising with the ability of the future generation to meet their own needs. I know this sentence is very difficult to understand, but let us try to understand in very easy way. In nowadays, the industries, the various sectors of the government are developing before the pandemic corona. Okay, nowadays our economy is very badly affected with this pandemic. But student, the development means विकास. हम जो अभी विकास हमारा कर रहे हैं, उस विकास के अंदर हम सिर्फ जो है हमारी सोच रहे हैं, हमारे बारे में सोच रहे हैं. यानी कि इंडस्ट्रीज़ जो है वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के ऊपर फोकस कर रही है. गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हो और उनको ज़्यादा आमदनी हो ऐसा सोच रही है. इंडिविजुअल यानी कि हर एक नागरिक जो है वो अपना विकास किस तरीके से हो ये सोच रहा है. ऑटोमोबाइल्स हो, पॉल्यूशन हो, प्रोडक्शन हो, हर एक क्षेत्र के अंदर लोग जो है वो शेल्फिश होते जा रहे हैं. वाई आई एम ट्राइंग दिस वर्ड शेल्फिश? बिकॉज स्टूडेंट, we never think about our future generation, what we will give to our future generation. हम जिस रफ्तार से हमारा विकास कर रहे हैं, तो इस विकास का बहुत ही खराब परिणाम अभी भी हम भुगत रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट. हमारा पर्यावरण जो है वो बहुत ही खराब तरीके से असर कर रहा है. कैसे? पॉल्यूशन से, हैज़ार्डियस गैसेस से, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से. इससे एक चीज़ तो ये हो रही है कि जो फॉसिल फ्यूल का प्रोडक्शन है उसके सामने उसकी खपत जो है वो दुगनी है. फॉसिल फ्यूल जो इस्तेमाल होता है उसके कंपैरिजन में उसका उपयोग ज़्यादा हो रहा है. हम ऑटोमोबाइल्स के अंदर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सीएनजी, एलपीजी हमारे घरों के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल हम तो कर रहे हैं लेकिन इतना अनरिस्ट्रिक्टेड मैनर में कर रहे हैं कि उसके दाम बढ़ते चले जा रहे हैं. आपने कभी देखा पेट्रोल के दाम घटे? मतलब पेट्रोल पहले 60 रुपये लीटर मिलता था तो अभी 79.81 रुपीज़ लीटर मिल रहा है. ठीक है, तो उसका दाम कभी आपने सोचा कि कभी वो 70 रुपीज़, 65 रुपीज़ तक आ गया? नहीं. एलपीजी, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, जो जिसका इस्तेमाल हम हमारे घरों में डोमेस्टिक पर्पस के लिए करते हैं, खाना बनाने के लिए, गर्म पानी करने के लिए और अदर चीज़ों के लिए करते हैं, उसके दाम पहले 350 थे, बाद में 400, 450, 550 और अभी लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस का सिलेंडर आपके घर पे जो आता है उसका दाम 600 रुपये है. 16 किलो का एक गैस का सिलेंडर 600 रुपये का, तो पर केजी उसका भाव गिन लो. ठीक है, लेकिन हम इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है इतने ज़्यादा दाम होने के बावजूद भी खतरनाक तौर पे कर रहे हैं. अब इससे कोई अच्छी इफेक्ट तो पर्यावरण को हो नहीं रही है. अल्टीमेटली वी आर पॉल्यूटिंग अवर एनवायरमेंट, नथिंग एल्स, विद द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फॉसिल फ्यूल्स, बिकॉज इट विल प्रोड्यूस द carbon dioxide, sulfur dioxide and the various oxides of nitrogen inside the atmosphere. Carbon dioxide, खतरे की घंटी. क्यों? It is the gas which is responsible for the greenhouse effect. It is the gas which is responsible for the global warming also. ग्रीन हाउस इफेक्ट के अलावा ग्लोबल वार्मिंग भी दुनिया के सामने सबसे बड़ा खतरा है. पोल्स के बर्फ़ पिघल रहे हैं, नदर्न और सदर्न पोल्स के अंदर जो भी बर्फ़ है वो पिघल रहा है, उसकी वजह से वाटर लेवल इंक्रीज़ हो रहा है. तो ये क्या कारण क्या है इसके? बेसिकली द एमिशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द मेन कोज फॉर दिस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. ओके, उसकी वजह से एक पूरी की पूरी परत बन गई है पृथ्वी के आजू बाजू के, जिससे सन में से जो लाइट रेज आ रहे हैं, दैट लाइट रेज कमिंग टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस
and cannot return back to the atmosphere because of the carbon dioxide excess amount, and it causes the rise of temperature, which results into the global warming. Students, तो हम जो विकास, हम जिसे भौतिक सुख सुविधा, जिसे हम समृद्धि कहते हैं, एक्चुअल में वो तो लोगों के लिए, एक हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए वो एक श्राप है। कैसे? क्योंकि हम इसका इस्तेमाल इतने अनरिस्ट्रिक्टेड मैनर में कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी को शायद तकरीबन जो अभी 80 रुपये लीटर पेट्रोल है, वो अतिशयोक्ति नहीं होगी कहने में कि वो 200 रुपये लीटर हो जाएगा 50 साल के बाद। क्या तभी हमारी फ्यूचर जनरेशन इसे इस्तेमाल कर पाएगी? नेवर। सो स्टूडेंट, द डेवलपमेंट दैट वी नीड इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, यानी कि ऐसा विकास कि जो हमारी वर्तमान की जो पीढ़ी है उसकी मांगों को पूरा करे विदाउट compromising with the ability of future generation to meet their own needs. आने वाली पीढ़ी को अपनी मांगों से समझौता ना करना पड़े, इस तरीके से जो हम विकास करते हैं उसे कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, और पूरे एक पैराग्राफ में यही चीज़ आपको समझाई गई है। ठीक है, the items that we are utilizing currently that may not be available for the future generations, some luxuries, some fossil fuels that we are using, which is not available if we will use these resources in this unwanted manner. Okay, there is a tremendous decrease in natural resource due to the economic development, and their quality is also deteriorating. Okay, in this condition, there is a need to change the idea of development. The development that we currently doing is not for the future generation. It is only for the selfish generation of the present. So the idea of sustainable development is need to be studied because of present development and effects of it on environment. So for the sustainable development, what we can do? The following strategy should be adopted for the conservation and preservation of the natural resources. Okay, so what is the first way? The first way is to cultivate farms, forest, water resources which are renewable natural sources should be used in such a way that their quality is maintained. Means the land pollution, deforestation and the contamination of the water resources should be limited in order to maintain its quality, because they are renewable natural resources, and the non-renewable like petrol, diesel, coal, minerals should be used judiciously. यार कुछ तो सोचो हमारी जनरेशन के बारे में, ऐसा ना हो कि कहीं हमारी आने वाली पीढ़ी को वापस साइकिल ना चलानी पड़े. Industrial location should be decided on the basis of lesser transportation cost. A sincere attempt should be made to achieve eco-friendly development. If the student industry's location is nearer to the raw material area, then the transportation cost is lowered down. So it is not a big deal. The transportation cost is not big deal for the big industries, but the way it is polluting to the environment, it is the big deal. So apart from the less transportation cost, it also less affect to the environment. Those resources which can be used in more than one way should be utilized in a different ways, such as different irrigation systems are utilized for more than one purpose, producing electricity, flood control and transportation. When student, the natural resources like water, as we know that on the Narmada river, Sardar Sarovar Dam is constructed and the Statue of Unity is also built. So this is a multi-purpose project in which the electricity is produced, the tourism is also developed, flood is essentially controlled, and the transportation is also in plan at that place. Okay, so student, the resources need to be utilized in a different way. Natural resources should not be wasted. Control should be laid on unplanned disposal of industrial waste, poisonous chemicals, increasing slums, etc. Students,
The natural resources that the industries are using are should be imposing on their excretion, like this kind of industrial waste and poisonous chemicals. Stress should be laid on use of non-conventional energy resources such as solar and wind energy. Means maximum utilization of the solar and wind energy should be there, so that we can decrease the dependency on the fossil fuels. And the solar and wind energy also called as the cleaner source of energy. What are the steps that we take to protect the environment? For the first time, Earth Conference were organized in 1972 in Stockholm in Sweden. Thereafter, from time to time, convention and camps have been organized for protection of environment at the global level, in which it was decided to take a different step for environmental protection. India is also involved in these global efforts. So, what the India is doing, let us try to understand. First, information about pollution condition of different cities of nation is presented. Means in this Earth Conference, which is held at a regular interval of time, the pollution data or the pollution condition is given in the form of data to the different cities of the nation. Means if the pollution data need to be presented in a Gujarat, the Ahmedabad, Surat, Vadodara, Rajkot, this type of cities data is presented in that conference. Second, central and state pollution control boards have been established to control pollution. So in order to control the pollution, central and state should be work coordinately and trying to restrict the industries who is polluting the environment. Third, 5th June has been declared as an Environment Day in the world, as we know. Fourth, in India, government passed Air Pollution Control Act in 1981. So in 1981, one act is passed which is for the air pollution control, according to which industries should work in a regularized manner and need to be follow certain restriction mechanisms related to the air pollution. International agreements have been signed for deteriorating level of ozone, disposal of nuclear waste and maintenance of biodiversity. Means each and every nation should consent or sign the agreement in which they will give a consent to reduce the deteriorating of level of ozone. They will reduce the disposal of nuclear waste and the nation should maintain the biodiversity so that the ecosystem should be balanced. Thus, conservation of environment is everyone's responsibility. If we do not control pollution, no doubt the life on the earth will be doomed soon. यानी कि अगर स्टूडेंट हम पर्यावरण की कद्र नहीं करेंगे तो पर्यावरण हमारे साथ ऐसा बर्ताव करेगा जैसा हम उसके साथ कर रहे हैं. ठीक है, हम नहीं सोचते पेट्रोल जलाने से क्या होता है, हम नहीं सोचते कि हम इंडस्ट्रीज अगर डालें तो इंडस्ट्री में से जो पोल्यूशन होता है वो वातावरण को कितना असर करता है. तो जैसे हम नहीं सोचेंगे तो वैसे कुदरत भी या तो पर्यावरण भी नहीं सोचेगा हमारे साथ बुरा करने में. So students, this is our sole responsibility to conserve our environment. So that's all about this topic and this lecture. Here your unit number 16 is ended. Economic liberalization, privatization and globalization. Thank you for your presence, student. We will meet in next lecture with exercise and a new chapter. Thank you.